तत्सत, हरि ओम तत्सत। 3 भट्टी से बोल दो गाने को ना। भट्टी जी, अभी ना पानी का बोतल पकड़ा देंगे। हरि ओम कल्याणस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम हरि ओम। आप सब, अब हम शुरू करें। हरि ओम। चलिए भट्टी जी, एक थोड़ा सा छोटा सा भजन से शुरू कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं 3 ओम कर देता। हाँ, पहले 3 ओम। गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
पाथर तर गए जग के तारण गा, पतित पावन नाम है तेरा, करो सबका उद्धार। हे सुखदाता सबके मन की, हे सुखदाता सबके मन की, कर दो पूरी कामना, कर दो पूरी कामना। तेरी स्तुति गाते रहे ये मन की भावना, मन की भावना। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, के कृपा करो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी बस विसर्जन होने ही वाला है, लेकिन गणपति हमारे हृदय में जो भी नाम बोलो एक ही प्रभु हमेशा हमारे हृदय में। आप सबको प्रेम भरा आत्म प्रणाम। All of you online who have joined us and will be listening in the future, heart to heart, heartfelt divine love, light, healing, bliss, prosperity. May all be one, united with that one, with the goal of liberation, with the goal of never being born again. Let us march on. चलते रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखे। Never turn back and look. Whatever has happened, but with that, walk forward for improvement. कैसे हम आगे सुधारे, क्या गलती हुआ और हम आगे कैसे और सुधारे। कुछ कम जप हुआ, कुछ कम पूजा हुआ, if you prayed less or something missed the other day, how can I recover today? How can I find out time? Allocate your time, just like we have scheduled for everything. Going to, of course, getting up, showering, brushing and everything. Same way there has to be schedule for your prayer. Take out time, put it, no talking please. Take out time to have that oneness, quietness. जो शून्य जो है वही तभी मिलता है। अकेलापन, लोग बोलते हैं अकेलापन हो गया, नहीं, वो प्रभु साथ है। अकेलापन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सिर्फ टटोलना है यहाँ अंदर। We have to search within. So I do, for the sake of those who do not understand Hindi, I do want to explain little bit what Bhakti ji. Thank you Bhakti ji. बहुत बहुत आशीर्वाद। इतने he had surgery and yet he is here. His son brought him to do this service. Look at his bhavana, look at his bhakti, and look at his age. He still goes to temples day and night. If it has to be till midnight, he stays there to do service. So, प्रभु आपके कृपा करे, सदा रक्षा करे, हर एक तरीका से आपके खूब शक्ति मिले, भक्ति बढ़े और मुक्त हो जाओ। इतना प्रभु कृपा बन गया है, आगे भी बनते रहे। परिवार सहित सुखी रहो, आनंद में रहो। I will blessing Bhatti ji, and I just want to say also that the bhajan, the kirtan he sang, those of you who don't understand Hindi,
He's saying, my feelings, O Lord, bhavana, my feelings is that I never want to get away from your lotus feet. Keep me near you, don't let me go. And then furthermore, but that was the basis of his bhajan. So we all should have that bhavana, that feeling. Oh Lord, never let me go. Just like I say, oh Lord, I am just that, oh Gurudev, Bhagwan sab ek hai. Separation nahi karna hai. एक ही है. तो हम उनके चरणों के धूल है. Dust particle at the lotus feet of our Gurudev Bhagwan, and any name you take, Ram, Krishna, जो भी प्यारा लगे, शिवा, सब एक है. कोई ऐसे नहीं ला कि इसका नाम छूट गया, उसका नाम छूट गया. एक नाम लिया, सबको मिला. ये भावना, एकता, एकाग्रचित होके, कंसंट्रेशन. तो ऐसे खूब 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 भक्ति में डूबे रहो. और सबको स्वागत है हृदय से प्रेम भरा इस सत्संग में. जो नहीं आ पाते हैं, प्रभु उनके ऊपर कृपा करे कि वो आ पाए. those of who are online, but those who are not online because of something, may God give you time next week to attend, because this time ये पल, ये घड़ी नहीं वापस नहीं आएगा. जो छूट गया, प्लेन चला गया तो चला गया. तो यही बात है कि हम सबको हिम्मत करना है. तो उससे आगे हम बढ़ते हैं गुरुदेव का, गुरु का स्तुति करते हुए. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. सद्गुरुं तं नमामि. सद्गुरुं तं नमामि. I'm just sorry, what some thought came. Julie ji, if she was here, I think Bhai ji had said last time that we use a mic that will, No, they'll be able to hear everywhere. We are not ready for that. Naidu ji does that. Yeah, the Pandit Jis use that one. So if they have it, they can bring it so everyone can hear. Adorations to the divine preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru we offer our adorations. Om Shri Guruve Namaha. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of Pujya Gurudev, Pujya Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Miami, Florida, to our Param Gurudev, Pujya Shri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. To the entire lineage of Gurus, our humble Sashtang pranams. Pranams to saints and sages of our ancient times, Saptarishis, Koti Sashtang pranam. Pranams to saints and sages of all religions, to all Brahman Devata, to all Acharya Jis, Shastri Jis, Pandit Jis, and all divine devotees. Atma Pranam. Prabhu Raksha Kare, my Lord, bless each and every aspirant and their near and dear ones. Message for today from Yoga
quotations by Pujya Gurudev. How to develop inspiration. So we have been pondering on number 24 for a while, which begins with these points are important for developing and promoting inspiration in one's life. And we are on J today. So probably I'll do J and K and we'll be done with number 24. They are small ones. So you are a child of God. कौन कौन भूल जाता है? सिर्फ देखते हैं शरीर का माई बाप. Our bodily mother and father we remember. But we all in totality are children of that one God. That soul in us has come from God in the body with the 5 elements, but yet the DNA of our parents, physical body parents. So that is why we are connected. We are all family. We are all one, soul to soul from one source. We are all brothers and sisters in those terms. So you are a child of God. Never forget. Don't think that my father passed away, my mother passed away. Eventually, there's only one mother and father. एक ही प्रभु, एक ही माता पिता हैं, हम सबका. The kingdom of God is your inheritance. प्रभु का सत्ता हम सबका अधिकार है. जैसे माता पिता के घर अधिकार से हम जाते हैं, वैसे उनके पास जाना हमारा अधिकार है. लेकिन हम भटक गए, भूल गए. We have forgotten that we all have that permission to go to that one, go back to our real home. With this understanding and realization, you can be like a molten river of golden inspiration. ये समझ जाओगे तो हाथ में, जैसे नहीं बोलते दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी उधर भी कहीं कुछ भी कर लो तो जरूर हम प्रभु के घर पहुंचेंगे. तो ऐसे याद करें. And then K is be inspired and move on to the goal of self-realization. Move on to the goal of self-realization. ये मत भूलो. आपका असली इच्छा, real goal of life is self-realization. कि आत्मा परमात्मा जोड़ना है, एक होना है. वही लक्ष्य होना चाहिए. बाकी सब कुछ तो यहाँ खेल है, ड्रामा है. लेकिन ड्रामा तो होना है, होगा. कभी अच्छा लगता, कभी दुख लगता, कभी हम रोते हैं, कभी क्या होता है. हम संत को भी होता है. ये नहीं सोचो कि हमको नहीं होता. हमको भी दुख होता दूसरों को दूसरे के दुख पर, तभी कंपैशनेट होते हैं. तो ऐसे प्रभु सबके कृपा करे. समस्त लोकः सुखिनो भवन्तु. तो अब हम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, पवित्र ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को. Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, to all the scriptures, to the divinity in each and every one of you, those who are listening online and who are physically present. May the divine blessings be with you. To listen to Gita is a great, जब कई जन्मों के पुण्य जागते हैं, when many lifetimes of merits fructify, you get
proper guidance of the Bhagavad Gita, तो आपको भगवद गीता का गूढ़ तत्व, गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है. एंड दिस इज अ स्क्रिप्चर दैट कैन लिबरेट यू, मुक्ति दिलाने का सक्षम है, बट अपने आप नहीं प्राप्त होता है. यू नीड गाइडेंस, यू नीड टू बी प्रॉपरली explained what the depth of these shlokas is, what the meaning is, and then you have to lead that life. वो जीवन बिताना पड़ेगा. श्रवण, मनन, निधिध्यासन, 3 चीज होता है. अभी आप श्रवण कर रहे हैं, बहुत भगवान का कृपा, great act of God, we are all here, we are listening. Then after the satsang is over, you contemplate. Don't just start going to shopping and forgetting about it कि आज का ड्यूटी हो गया. ऐसा नहीं है. जो आपने चबाया, जैसे गाय होती है, what does a cow do? जुगाली करती है. She first eats the grass quickly, then when she goes and sits in her cow shed, आराम से निकाल के आनंद लेके उसको झाग भी निकलता है, कभी कभी देखते हैं. You see that. So that is what we should also do. Take these shlokas, pick one thing. We will say so many things, but one thing that is applicable to your life, and you change that. That is the biggest Guru Dakshina you can give us. By changing your life, by adapting this path, Nanya Pantha Ayanaya Vidyate, there is no other path. This is it. Hard work, dedication, even for worldly things you work so hard. What about God? तो भगवान के लिए अगर हम मेहनत करें, आंसू बहाएं, पालें, क्योंकि कितने जन्म हो चुके हैं. So many of you have had countless lives. Don't forget. भूलना नहीं इस बात को. जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा जब तक आप उसको काटोगे नहीं. Till you interrupt the process, it will continue on and on. तो यही ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में दे रहे हैं. Lord Krishna is guiding Arjuna in a battlefield, and the battlefield where people are going to die. Meaning we all have that battlefield. ये अर्जुन की battlefield नहीं है, उसका युद्ध नहीं है, आप सबका युद्ध है, हम सबका युद्ध है. और अलग अलग लोगों को अलग अलग संग्राम करना पड़ता है. We all have to go through our own individual battle. That is कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र वो है जहां पर आपका धर्म आपको युद्ध करना है. That is the battleground. Within you, you have a mean boss, you have to deal with him. अब उसको, वो आपका युद्ध है, उसको देखो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं उसको ठीक करने के. अर्जुनों को भी यही प्रॉब्लम था, attachment binds you. So last Sunday we had covered जो नास्तिक लोग हैं, people who are atheists, and these days more people are becoming atheists because they think science is everything. हम मार्स चले गए तो भगवान है ही नहीं. ऐसा सोचते हैं. इतना मूर्खता है कि हम एक छोटी सी चींटी हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं. ये पहाड़ क्या आपने बनाए? समुद्र आपने बना दिए. अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व, earth, water, fire, air, ether. Which one have we made? We can't even control a small corona. It shook the whole world for 3 years. And now we are claiming we know everything. The environment is all messed up. So we as humans are not doing our duty. हम अपना काम नहीं कर रहे. देखिए how many people come Bhagavad Gita like satsang and so few, because this is the way of the world these days. But each soul has to go through their own journey. कलि युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये युग नहीं है, आपके अंदर ही है. जब आप सत्वा में बैठते हो, अभी you are in सतयुग. We are all in satya because we are discussing high spirituality, talking about connecting with God. तो ये सत्वा है. जब ये खत्म हो जाता है, we start doing worldly things, playing games, running here, there, worldly activities. रजस आ जाता है. Now no more sattva. We are into world, and finally when you start getting into darkness or sleeping or excessive inertia, that is tamasic, tamas. तो ये तीनों चीज भगवान भगवद गीता में अच्छी तरह से समझाते हैं. Deeply he explains all these things. So understand that the world will not change. You have to change. बदलना हमको है, दुनिया नहीं बदलेगी. अगर आपको, even if you get enlightened, the world doesn't get enlightened. You get it.
आपको समझ आ जाता है मेरा जीवन मेरे को कैसे सुधारना है, तो सबको सुधारने में नहीं लगो, अपने आप को सुधार लो। जस्ट वरी अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू विल लाइट योर सेल्फ, यू बिकम अ लिट कैंडल। एक मोमबत्ती जल गई, अब उससे कितनी ही जलेंगी, इट कैन गिव सो मेनी। एंड दिस इज वाई वंस यू लर्न समथिंग, शेयर, जिसको भी पता है उसको ज्ञान दो, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान अब आ गया है। जब तक नहीं था तब तक कोई बात नहीं, तब तक भगवान माफ करते हैं कि यू डोंट नो, बट वंस यू नो एंड देन यू डोंट डू इट, फिर कोई माफी नहीं है। देन गॉड सेज वेट अ मिनट, you were given the guidance, you were shown this. जैसे जॉब में भी you get fired if you don't do your job properly, isn't it so? तो भगवान भी यही बोलते हैं, I've sent you to Mother Earth to do what? To be a good human being, to share, to be kind, compassionate, loving, and most important, to find liberation. अपना मुक्ति का द्वार खोलो और पुर्र करके उठ जाओ, वरना फिर योनि पे योनि चलता रहेगा। एंड देयर इज नो गारंटी। डोंट फूल योरसेल्फ थिंकिंग यू विल कम बैक एज अ ह्यूमन बीइंग। यू मे नॉट, यू मे कम डाउन, यू मे गेट डिमोटेड एज एन एनिमल or a plant or a tree, depending on what actions you do. Now most of you are attending Bhagavad Gita, you are doing spiritual activities, so no doubt you will come back as humans or better, but not liberation. लिबरेशन ऐसे दान करके, बड़े बड़े काम करके, मंदिर बना के नहीं मिलता है। मुक्ति मिलता है अपने अंदर जाकर भगवान से एकत्व करने से, when you become one with the divinity. And that is not a simple thing. You have to give your tan, man, dhan, body, mind, resources, everything. Because after all, अब हम आरती करेंगे, फिर बोलते हैं उसमें तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। बोलते तो हैं, मुंह से तो बोलते हैं, बट डू वी रियली मीन इट? लेकिन कोई मांगने लगे तो? That is the depth of the process, and that's why most of us don't progress. We go to some extent, उसके बाद बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, those people who are demoniac, जो नास्तिक लोग हैं, वो मुझे मानते ही नहीं है, बट दैट्स ओके, दिस इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलम्, जो कर्म कर दिया उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। देन वंस ही पेज द प्राइस ही विल लर्न। वंस यू टच द फायर, यू नो इट बर्न्स यू, यू विल नॉट डू इट अगेन, बट टिल यू नो यू विल mess with it. And that's what God is also hospitalizing the souls. जो आप देखते हो दुख है, कष्ट है, ये नहीं है कि भगवान बहुत बुरा है लोगों को, God enjoys in punishing you. No, He has nothing to do with it. God is a judge. वो जो आप ही ने किया है वही उसका सेंटेंस आपको सुनाते हैं। आपने तोड़ा, जी तोड़ा, did you cross the red light? Yes sir, I did. Okay, then pay the fine or go in the jail or do something. There is no other way. Nobody will tell you that, because we are saints, we can say it with authority. हम संत हैं, हमारा को किसी से क्या लेना देना, हम तो आपको बताते हैं आपके भले के लिए क्या है। So we try to touch your soul. We don't show intellectual knowledge. We don't just say, oh, this shloka says this and only talk about that shloka. We also want to give you the knowledge of spirituality overall. So here, that's what Lord Krishna is saying. Murkh log, those people who are atheists say, I don't exist. They think I am a human being just like we are human. हम मानव हैं, वो प्रभु क्या है? परमात्मा। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, हमसे कहीं अधिक है। आपकी सांस वहीं से ही आती है, उस एनर्जी से आप सांस ले रहे हो। Suppose that energy says no more, we will be gone. So that is important. So before we start the shloka, I do want to make a short announcement that Julie ji had given us. Today are two twins with us, 3 years old, Avyan and Anisha. They aren't here, so don't announce now. They're here. No, they're यहाँ जाए तब करना. Okay, so but they're doing puja. We are telling everybody else. Okay, so they are doing Annadanam today. Himanshu ji, Amita ji, and Sugandhi ji, and then we'll briefly announce in the end also. Yeah. That's a good idea. So let's move on to the shloka now. So we are on the 13th shloka of chapter number 9. So 9th chapter
chapter is known as Raj Vidya Raj Guhya Yoga, meaning the traditional secrets of the royalty. Royalty used to be kings. These people who were emperors, उनको ये शक्ति दिया जाता था, तो वही ज्ञान अब भगवान अर्जुन को दे रहे हैं. So he says, don't be atheists, believe in my power, have faith. All these things are important. श्रद्धा, विश्वास, भक्ति. तो उसके साथ जब तुम मेरे पास आओगे, शरणागत होकर आओगे, then you are my devotee. तुम मेरे भक्त कहलाओगे. तो he continues now. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. But O Partha, Arjun, the great souls taking refuge in me or in my divine nature worship me at all times. Krishna, Krishna, Krishna. जब हम लगातार जप करते श्वास में कृष्ण कृष्ण, राम राम, राधे राधे. So, taking refuge in my divine nature, worship me at all times, knowing me to be the imperishable nature of all beings. कभी खत्म ना होने वाले प्रभु, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं. अनन्य, नॉन ब्रोकन, फोकस्ड, चलते रहे. तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? What is God trying to guide us here? That in the last two shlokas, don't be an atheist, don't say God doesn't exist, don't inflate your ego. होता क्या है कि हमारा अहंकार बढ़ जाता है. जब भी कुछ अच्छा होता है हम सोचते हैं हमने किया, बुरा हुआ तो भगवान आप ही को पार्शियलिटी करता है. It's not so. So here God is saying, oh Arjuna, those people, जैसे आप लोग श्रद्धा से बैठे हैं, with devotion and beautifully you are listening, he says they have good prakriti, दैवी prakriti. You have so many choices coming to the temple on a Sunday. Beautiful choice, sattvic. It has got sattva because इसमें दैवी प्रकृति के signs हैं. दैवी means you are believing in godly activities, purity. मन के अंदर जाना ही तो मंदिर है. मंदिर में जब हम बोलते हैं we go inside, so that is what we have to do. So God says महात्मा जन, those people who are elevated souls. वरना आत्मा जन, महात्मा जन जिसकी अधिक बड़ी विस्तृत आत्मा है, expansive. So they have good qualities. Sham, dam, uparati, titiksha, shraddha, samadhan. These are divine qualities. Divine qualities, godly qualities. They depend on those and then they consider me as the root source of everything. वो ये समझ लेते हैं भगवान सब कारण के महाकारण है, उसकी वहां से सब सत्ता शुरू होती है. That is the cause of the effect. The effect is the world, the cause is God. But eventually to reach to that cause is our journey. वही इसी को हम बोलते हैं spirituality या धर्म या faith, ये सब बातें. तो वो अनन्य मन से मेरी आराधना करते हैं. So those Mahatma, they meditate on me and they are focused on me. व्याख्या तो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, अर्थात मुझ सब भूतों को अर्थात प्राणियों को मूल स्रोत और अविनाशी जान. तो भूतादिमव्ययम, I am in every being. Don't think God is not inside an ant. He is in an ant. He is in you. He is in a cow. He is in a pig, a cockroach. Everywhere God is. Don't just stamp him
and kill him out. So why? Because he moves, he acts, he eats, they have families. Study it in Google. These days science gives you everything. You see how intelligent they are. Give a salt to an ant, it will refuse it. You give a sugar, it will like it. Not only will it like it, it will bring everybody. हम लोग क्या करते हैं, ओ चुप करके बैठ जो तुम्हें मिल गया उसको नहीं बताओ. अरे नहीं, सबको बताओ, सबको बताओ. ये ज्ञान जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, it should be shared with everybody. Because even if one person is helped by your effort, you have done a big act of service, great act of service. It's not doing big acts, it's doing small acts with love. जब हम छोटे छोटे काम भक्ति से, श्रद्धा से करते हैं, उसका अनुभूति एक और होता है. It's a very different feeling. So ananya meaning, be sincere. When you pray, forget about the world. Think the world doesn't exist. Turn off your cell phones. Turn off your noises. Turn off the noises inside. मेरे को ये करना है, वो करना है, सफाई करना है, यहाँ भागना, वहां भागना, सब बंद. क्योंकि सांस चलना बंद हो गया, कुछ नहीं भागेगा. Nothing will work. So give that importance. If your manager calls you, you make that meeting happen. You will cut down everything. Sometimes you have to cancel your vacations, don't you? Here, God is waiting for you every morning and no meeting with Him. First meeting should be with God. He is your biggest CEO you can ever imagine. भगवान से बड़ा आपका सपोर्टर कोई नहीं है. और जब दुख आता है, कहाँ भागते हो? कहाँ भागते हो? अरे भाई, डॉक्टर बोलता अब तो कुछ नहीं हो सकता, प्रार्थना करो. फिर भगवान का याद आता है. जब याद करना चाहिए तब करते नहीं है. इसीलिए इन्वेस्ट इट नाउ, इन्वेस्ट दैट टाइम डेली. दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए. Everybody remembers when pain comes, automatically you think of God. But when good times come, you tend to party. Let's throw a party. Let everybody see. ये करो, वो करो, डन 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 डन, जोर जोर से ढोल बजाओ. हैं, भट्टी जी भी होते हैं कभी कभी, हैं. तो ऐसा सब चलता है. बट असली में क्या है कि you have to really say, how long will this last? Adversity and prosperity, my friends, are two sides of the same coin. उसी सिक्के के दो, एक में हेड्स है, एक में टेल्स है. तो अगर अभी हेड्स चल रहा है तो घमंड नहीं करो. डोंट फील प्राउड, बिकॉज सून टेल्स इज कमिंग. एंड इफ टेल्स इज कमिंग, डोंट बी डिजेक्टेड. दुखी मत हो, बिकॉज सून दैट विल चेंज. दिस टू शैल पास. बड़े बड़े कष्ट लोगों के दूर हो जाते हैं और बड़े बड़े घमंडियों के सिर धूल में मिल जाते हैं. होता है कि नहीं? So that is what God is saying. Those people who are dedicated to me, they are divine. उनके पास वो शक्तियां हैं. So दैवी प्रकृतिम, सात्विक हो जाते हैं. They are purity conscious. Purity conscious means ये सत्व अपने आप नहीं आता. Growing grass is hard, growing weeds is easy. वीड्स उगाने में कौन सा मेहनत करना पड़ेगा? अपने आप आ जाएंगे. बुराइयां करने में क्या करेगा? अपने आप आएंगी. सो हार्ड क्या है? अपने को शुद्धता रखो, प्योरिटी में रहो. बट व्हेन यू हैव टू डू योर स्केड्यूल, डू इट एवरी डे. डोंट जस्ट डू इट one day and then forget about it, then 6 months. Off and on is not good. Every day. Why every day? उसको बोला जाता है नित्य कर्म. क्योंकि every day you don't say, let me brush tomorrow, let me take a break today. You don't do that. You brush it. You take a shower. You go to work. You eat your food. Every day. ऐसे ही भगवान मुझे बताते हैं, सत्वा बढ़ाने के लिए, to increase purity, you should do those things daily. And then what else? How else should you check yourself? Am I having compassion? Compassion. Very important quality. When you see somebody who is less fortunate, don't say, hey, he didn't work, he didn't do anything. Be kind-hearted. Say, he's struggling. Can I help him? If you can't help him, at least don't criticize him. That is not your point. आप अपना कल्याण करो, दया रखो, सबको दया देखो. और दूसरा, निष्ठा. Have faith. A lot of people start with spirituality with a great enthusiasm.
स्वामी जी कल से हम अपना जीवन बदल देंगे, आपका लेक्चर इतना अच्छा लगा, हमें समझ आ गई बात, कल से हम यही करेंगे। अच्छा, शुरू में बड़ा जोर से बैठते हैं, फॉर 6 hours दे विल डू इट, और उसके बाद पेप्सी की तरह पहले खोलो मुंह, जोर से आवाज आता है, इट्स कॉल्ड सोडा वाटर एंथुसियाज्म, दैट इज नॉट गुड। It is better to be doing it only for 10 minutes every day, analyze your activities, how busy I am, how much time I can afford to God, but make him an eldermost member of your family. You are never alone, even if you are single living by yourself, God is your father, mother, brother, sister, everything. So feed him first, then you eat. समझ गए? छोटा छोटा बात करना है, बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं करना, छोटा चीज प्यार के साथ करना है। That is what is important. So here God is saying पवित्रता, पवित्रता meaning purity. Easily said, हमने तो बोल दिया प्योरिटी, अब प्योरिटी करने में कितना समय लगेगा? हमारे अंदर क्या क्या है डब्बे में अंदर, इन दैट ब्लैक बॉक्स? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, डिजायर्स, एंगर, ईगो, jealousy, unlimited problems are inside only. Then we say when we meditate, we can't meditate. How will you? Because all those things have been shaken up, they come up. So it's important to first purify. It's known as pratyahara. Pratyahara is like a turtle, you go within. But everything is outside only, we see outside. बोलते काम क्रोध मद लोभ मोह ने ऐसा आकर जकड़ा, सताया, सब कुछ होने लगता है। And don't think that you are alone with that problem. Everybody has these problems. ये काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, and you also are kind, compassionate, loving, human. All those goods. So good and bad qualities are mixed in us. ये दोनों मिश्रित हैं। इसीलिए कभी हम बहुत प्यारे बन जाते हैं, कभी हम क्रोधित हो जाते हैं। उस समय कोई हमारा पिक्चर देखे ले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, because we would not like to see that angry face. And you say, is it me? Because yes, absolutely it was you. But we change. But this is why the gunas are important. Once you are in tamas or rajas or sattva, तो इसीलिए भगवान बताते हैं मेरा काम है आपको बताना। तो महान आत्माएं वह हैं जिनके हृदय मेरे द्वारा विशेष रूप से मेरे वासस्थान रूप में बनाए गए हैं। So those special souls are who? Those whose hearts belong to me. They have given their heart to me. We give our heart to sweethearts. है sweetheart. जब प्यार होता है किसी को बोलते हैं हमने अपना दिल उसको दे दिया, है कुछ खाना को अच्छा नहीं लगता, अब नींद नहीं आती, उसी में उड़ते रहते हैं ना। तो ये भगवान कहते हैं अपना हृदय मुझको दो, give it to me. That's what Radha did, gopis did, है ना। उन सब ने अपना हृदय भगवान को दे दिया था। मीरा ने भी यही किया था अभी 15th century में। She gave herself to God. Didn't care am I a princess or what, वो राजपूत खानदान के। तो महात्माओं के विशुद्ध हृदयों में मैं वास करता हूं। तो God says, see God is in everybody, but उसको चमकाना, पॉलिश करना, अपनी इम्प्योरिटीज को दूर करना इज अवर प्रॉब्लम। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम शुद्धता अपनी खुद करें तो धीरे धीरे हमारा जो अंदर का प्रकाश है वो बाहर आएगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं when we see sages and saints and spiritual people, we find a lot of peace. Why does that happen? Because of the light that is purifying them already. They are living a life of purity. शुद्धता का जीवन जीते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, they don't do violence, they are living in purity, they are living in God, they are not hurting anybody. We can also do all those things. तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि those pure souls जिनको हम महान आत्माएं बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, साधु संत बोल देते हैं, those people, they are not by just wearing clothes. These clothes don't mean anything. संतरी रंग तो कोई भी पहन लेगा, चोर भी पहन लेगा. But you have to be genuine and you have to guide others by example. Only then you have the authority to preach. Otherwise, it's not good. बिना बात के बोल दो ये करो वो करो, खुद तो कर नहीं रहे. तो इसीलिए भगवान बताते हैं, भगवान खुद करते हैं.
God teaches you by example. He was born in a prison. भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? जेल में। आते ही कितने बड़े बड़े राक्षस उनको चूसने लग गए, मारने लग गए, कितना कष्ट झेले। And then so God is saying your problems are nothing. Don't say मेरे को समस्या है, मुझे कष्ट है। कोई कष्ट नहीं है। भगवान की सत्ता के अंदर हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, और अगर हमारे पास ये भक्ति है तो हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे पास जो भक्ति का रस है, दैट डिवोशनल सेवा भाव, तो शुद्धता लाना बहुत अनिवार्य है। प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज यू प्योरिफाई ऑल योर क्वेश्चंस विल सीज, योर मेडिटेशंस विल गेट बेटर, you will start feeling in harmony. So the first thing to do is really go deep within, slowly and steadily. It will not happen overnight. Depends on कहाँ से हमारा यात्रा चल रहा है, where we are coming from. So little things done with love every day, करत करत अभ्यास। तो मैं अचल भाव रखता हूँ, वो मेरे प्रति अचल भाव रखते हैं। God protects you and you pray to God. God also promises you, I will take care of you if I know you are sincere. But हम sincere नहीं हैं। जब आवश्यकता पड़ता है भगवान को याद करते हैं, जब आवश्यकता पूरा हो जाता है भगवान भी साथ साथ छूट जाते हैं। तो सात्विक प्रकृति, शुद्ध हृदय और आत्मज्ञान से युक्त पुरुष महात्मा है। So what are the three things? God is saying, have purity. Number one, sattvic prakriti, meaning stay in sattva, as much purity as you can. Shuddha hriday, have a pure heart. Your heart is where I reside. If that is full of dirt and muck and all the worldly stuff, how can I sit? मैं कैसे वहां पर मैं बैठूं कहाँ? भगवान के लिए तो हमने आसन ही नहीं बनाया। Where is the place for God? He says. So शुद्ध हृदय और आत्मज्ञान से युक्त। The third is आत्मज्ञान। What is आत्मज्ञान? Knowing कि मेरी आत्मा का ज्ञान क्या है, अर्थात आप जो हैं ये शरीर नहीं है, जो दिखता है वो नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है। You understand? So your atma, your consciousness, your soul, your आत्मा, God particle, अंदर आपके जो भगवान का वास है वो भगवान है, that is God. And he says that is that knowledge that the world is not real. If the world was real, we would be living perpetually. Permanent visa लगता, लगा नहीं लगा। कोई 100 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, तो कोई 5 साल का बच्चा भी चला जाता है, कैंसर हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं, इस ज्ञान रखना, दिस नॉलेज। एंड अर्जुनों को भी यही प्रॉब्लम था। अर्जुन वाज थिंकिंग द बॉडीज विल गो, सो देयरफॉर आई विल लूज माय फैमिली। गॉड इज लाफिंग। भगवान गीत गा रहे हैं। गीता का मतलब गीत गा, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड ही इज नॉट वरीड, बट एवरीबडी एल्स इज ग्रीविंग। सो गॉड सेज, व्हाई ग्रीव? अशोचन अन्वशोचत सोम। Don't grieve over things that should not be grieved for. What you should grieve for, किस बात का दुख होना चाहिए कि अभी तक हमने अपनी आत्मा को नहीं खोजा, हम यहीं भागते रहे, वहां भागते रहे, पैसे के पीछे, धन के पीछे, स्त्रियों के पीछे, इधर उधर। We have been running in the world for running after worldly things, but the real essence belongs within. तो अपने आप को पहचान लोगे तो भगवान को स्वतः ही पहचानोगे। You will automatically know God because I am Him only. So that is a Mahatma. So with this, let us move on to shloka number 14. God says, Satatam kirtayanto mam yatyantascha dridvrataha namastyascha ma bhaktya nityayukta upasate. Glorifying me at all times, steadfast in their high spiritual resolves, those great souls strive to know me. Endowed with devotion, they bow down in adorations to me, and they worship me. वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन
निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो भगवान आगे बता रहे हैं, गॉड इज एक्सपेंडिंग ऑन इट। ही लास्ट संडे ही वॉज एक्सपेंडिंग ऑन इविल पीपल। जो लोग मुझ में विश्वास नहीं करते, बोलते हैं भगवान है ही नहीं, उनके कैसे कैसे लक्षण हैं, व्हाट डू दे गो थ्रू, व्हाट डू दे डू एंड व्हाट हैपेंस टू देम। देखो भगवान एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। ही इज नॉट इवन लीविंग वन लिटिल थिंग फॉर यू टू से आई डिड नॉट नो गॉड, हमें ज्ञान नहीं था। God is like the biggest analyst out there, biggest. He will look at everything from a modern, talking to you modern people, because he says, here is the problem, what to do. So how should you solve this problem? What are the solutions? क्या क्या options हैं? भक्ति योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, integral yoga, karma yoga, all these he gives you. These are the solutions. Then he says, okay, now what do? You pick one that works best for you. उसको अपने जीवन में उतारो, उसको श्रद्धा से लगो, और उसके बाद जब लग जाते हो तो ध्यान लग के कल्याण हो जाता है। We benefit tremendously. So then once you become a Mahan Atma, everybody is entitled to become a Mahatma. And that is not just people who are wearing tilaks and wearing orange clothes. People who are civilian and sometimes are greater saints than these so-called people running around with titles and preaching, because they are doing it lovingly and they are doing it at home with total love and focus. Raja Janak was one such king. राजा थे लेकिन साक्षात्कारी थे। शुकदेव उनके शिष्य बने। Shukdev ji, who did the whole Bhagavatam, was guided by a materialistic king who was enlightened. So it doesn't matter on what clothes we have. He wasn't materialistic, he was detached. Detached, yes. Materialistic meaning a very, very opulent. They पूरा अभी भी उनका जनकपुर नेपाल में जाओगे, पूरा उनका राज्य था, इनका राजा जनक का। सीता मैया के पिताजी, जानते हैं ना जनक, राजा जनक, सीता's father, राजा किंग, लॉर्ड रामा's spouse, मदर सीता, उनके पिताजी, उनकी बात हो रही है। So it doesn't matter whether you are very affluent or very poor. भगवान ये नहीं देखते ये गरीब है या अमीर है, वो ये देखते हैं तुम्हारा भाव क्या है। What feelings do you have? What devotion do you have? So with this, now I see the puja is over and the family is here. So let's make that quick announcement for today. Those two beautiful twins we have, Avyan and Anisha, they are here today. They are turning 3 years old. So give them a big round of applause for their birthday. And Avyan, आजा। And Annadanam is today being done by Himanshu ji, Amita ji and Sugandhi ji. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for sponsoring today for the Annadanam, the Mahaprasadam that you all will enjoy through this family. And all we can say is happy birthday to this beautiful sweet girl. The other one is a little shy, huh? बेटा दूसरा वो पीछे है. So but anyway we are सबको हाथ grateful. जोड़ो, say नमस्ते। Get the blessings. जी यहाँ पर जोर से बोलो। Namaste. ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। नमः, good. So that's really Namaha, good. very good. She is turning 3 and lots of blessings to her. So All this of is, you I bless would her. like to say this is what modern in these days, to see younger families with this much value celebrating birthdays in a temple. Such a beautiful way. You can still go to Chuck E. Cheese's and all that later. लेकिन first get God's blessings. और पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो, फिर जो मर्जी करो बच्चों के लिए. That is आजा, perfect. आजा। So that is what we are saying. तो यहाँ पर भगवान गुणगान करते हैं, ये महात्मा हैं. Meaning these pure souls कोई are बात the नहीं. ones who Yeah, are taking yeah. God's name everywhere. बस force नहीं करना. हाँ. It's okay. Yeah.
सो सबसे पहले वो ओम का जप करते हैं. अच्छा ठीक, go ahead. Okay. All right, let's get back to the moment. We have only 2-3 more minutes. Then we will start the आरती, because थोड़े 12 बजे के करीब हम आरती भी करते हैं. तो शांत होके बैठ जाएं. गीता का एक एक शब्द अमृत है. स्माइल करो. Every word from Bhagavad Gita is divine nectar. So therefore we should not have idle conversations, because when we are in God's presence, it's His domain. भगवान का क्षेत्र बन जाता है. तो ओम का जप करो, शास्त्राध्ययन करते हैं. They study the scriptures and guide others also. That's what we are doing, taking these scriptures to whoever wants to listen and spend our time and resources on that. उपनिषद, जो उपनिषद हैं बड़े बड़े वेदा से निकले हैं, उसका ज्ञान लेते हैं. वे अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रुतियों का श्रवण करते हैं. आध्यात्मिक गुरु इज योर स्पिरिचुअल teacher, your spiritual master, the one who initiates you into mantra diksha. But total purity and faith is needed. If you don't have faith, don't get a guru. He will do nothing for you. He'll be useless. Don't go. But if don't think some miracle will happen, oh let me just try it. It doesn't work like that. You have to give your 100%. The guru gives his 100%. लेकिन आजकल बड़े कम हैं. मूर्ख गुरु मूर्ख चले. So the gurus are also deluded, and so are the disciples. They also want something quick and easy. There is no such thing. So meaning you work hard, you get the rewards. You dig the ground, water will come. But you have to have that faith. So that's what God is also saying. They will listen with faith. When Guru speaks, they listen and they give their life to the Guru. And we feel so humbled, both Swami, LP, Lalita Priyananda ji and myself, that we have been blessed to give our life and to our Guru. And this is what these yellow, orange clothes mean. You have taken sannyas, meaning the world doesn't matter anymore. We are already dead. Do you know? जब संन्यास हो जाता है मतलब शरीर का अब कोई मतलब नहीं रहा. It doesn't mean family, this. Everybody is our family. Everybody you love. Everybody is your child. She is our little granddaughter here. You see? You build that love with everybody in a beautiful, holistic way. Then you are taking you are learning from your Guru. Meaning become a source of love, compassion with everybody. Don't be, oh I hate him, I like him. If that hate and like is going on, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है. Duality, no duality. एकत्वम, सबको क्षमा करो. Forgive everybody. It's hard. It's not easy, because you say, Swamiji, you don't know what she did to me. No, we do know, but you have to still forgive, because otherwise what you are doing to yourself is worse than what she did to you. Because she's forgotten about it, you haven't. You are still continuing and torturing yourself. Why do that? अपने मन को शुद्ध करके, स्वस्थ करके भगवान का ध्यान करो सब. और and she helped you pay your debt also, mind you. ये हम बहुत दूध के धुले नहीं हैं. कई जन्मों पहले हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो इस रूप में आके जो चला जाए, अरे भाई चलो डेट सेटल हो गया, ऐसे समझो. Some debt has been settled, and live in gratitude. This is what Lord Krishna is saying. उन पर चिंतन मनन करते हैं और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं. Then when they get elevated, first they focus on our image. I like Krishna, I like Hanumanji, I like Devi, or I like Rama. All these are deities, Lakshmi, Durga Mata. But eventually he says, as you advance within your own Brahmarandra, आपके यहाँ पर और आपकी आत्मा में जो शक्ति है, वहां से आपको आत्मा का चेतन दिखता है. ओम के अंदर you say it all merges into one creator, which is nameless, formless. But you need name and form to bring it to this level. Otherwise, who are we? What does this mean? Even everything is a form. Om is a form. तो इस तरीके से भगवान कहते हैं वो मेरा ध्यान करते हैं. बट वो धीरे धीरे as you go and meditate deeper and deeper and deeper, you become like a salt doll. Salt doll goes in the ocean. What happens? She says, मैं देख के आती हूँ कितना गहरा है ना समुद्र, कितना गहरा भी देख के आती हूँ. है नमक की, तो जैसे ही वो घुसेगी, what will happen? She will start dissolving. That's what we all need to do. We start, once you dissolve in God, nothing else is needed. Who are you? You are the same thing as God.
ultimately, but don't go about saying I am God right now. We are not prepared for that. Why? Because we haven't purified completely. No, you are treading अहम there. ब्रह्मास्मि, वो बोल सकता है जो ब्रह्म बन गया है. और हैं हमारे गुरु जी हैं अलग. There are people, there are enlightened saints and sages, but they will never claim that. They will never say, look at me, I am God. नहीं, हम है लेकिन पहचान नहीं है, है लेकिन पहचान में कमजोरी है. तो आपके अंदर वो शक्ति तो है, सब में है. Every one of us has that potential, but you know, you have to first, there are diamonds in the mountains, in the mines, but you have to go dig them out. They won't automatically jump up and say, look, here I am, please pick me up. You have to do it. कितना मेहनत लगता है, बड़ा बड़ा इक्विपमेंट आता है, isn't it? Then you have to clean it up, wash it, and कितना, इतने बड़े पहाड़ में से इतना सा डायमंड. But it's worth it, isn't it? That's why people do it. It's so expensive. So that is why you go dig inside, go deeper, 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 and find God. But don't do it in a rush. Don't do it under stress. It has to be natural, with love, compassion. And if it's bothering you, meditation is not for everybody. What's the problem? Why do you have to meditate? Just be happy. Be happy. We try to do things and then we torture ourselves. I'm not happy now, I'm crying, I'm happy, I'm that. It's okay. Take it slowly. Sahaja Samadhi. Eventually you get to a state where you are always in meditation. चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते. अभी हमको सिखाया गया है, your body should be still, your heart should be compassionate, you should only think of that. Don't think of the monkey, okay? But monkey will come only because somebody told you don't think of the monkey. Now only monkey is coming. So with this is what God is trying to say. They have purity, they have truth, they have endurance power, they have love, they have compassion, and they have all these beautiful divine qualities. See? These are the ones we have to work for. So it doesn't happen overnight, isn't it? धीरे 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 मेहनत लगेगा. इंद्रियों को वश में करके मन को स्थिर करते हैं. So they stabilize the senses and they go deep within the heart. So yesterday, those who are listening online, Mr. Will had made a very important point. Very important. Pratyahara, going within. These senses will automatically, whatever you give to the world, you are accumulating inside. So going within is called Pratyahara. Agar meditation nahi ho raha, if meditation is not happening, first learn sense control of the eyes, nose, ears, sense, smell, taste, touch. One by one control it. ठीक है? तो मन, वचन और कर्म की पवित्रता, truth in your voice, in your thought and your action. Hands, heart, head. 3H को याद कर लो. हाथ से सेवा करो, with your hands serve. Heart से भक्ति करो, with your heart devotion, love of God, and with your head learn scriptures, spiritual things and mantras, all those things. So with your head get wisdom. That's what the three things you do, and then you are aligned. Otherwise, we say something, do something, and mean something else, and we wonder why we are not finding peace. Why are we not happy? हमको शांति क्यों नहीं? कहाँ से मिलेगा? जब हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं. तो फिर बॉडी, आपका गाड़ी भी अलाइन जब तक नहीं हो तो टेढ़ा भागता है. तो यहाँ पर आपका शरीर कैसे सीधा भागेगा? How will your body work? Isn't it? So with this, अत्यंत निष्ठा और भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं. Those people have deep devotion and bhakti. They love me with that feeling. हृदय में निहित अंतरात्मा के रूप में मेरी आराधना करते हैं. They worship me with all their heart. God has no ego. He is not saying worship me because he wants to be glorified. He is saying it for you. You are living in his world. You are paying his breath. You are taking his water, his fire, air, ether. सब कुछ तो आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो. तो भगवान बोलते हैं, learn to do gratitude. Gratitude नहीं करोगे तो how will you evolve? So therefore, it's not for him, it's for you. Most people get confused by these things. Why is God saying, praise me, praise me, praise me? He doesn't care whether somebody touches our feet or not. How does it matter? But if he does, it helps him. We say, bless you, he gets blessed. Not that we care, isn't it? But we love everybody. Whether somebody does or not, it doesn't matter. लेकिन सबका स्थिति है.
उस स्थिति तक पहुंचने के लिए स्वतः होता है, then it automatically happens. You don't have to force yourself. So my time is really up now. So we will start with shloka number 15 next Sunday. I hope you are enjoying these deep studies. This is not just a regular satsang. These are transformational lectures that you will not even get at Harvard and Yale and Stanford. These people who are running everywhere, you are getting them free here, mind you. Free. And all you can do is sponsor like this family did, or become active, become regular, tell your friends. Because after all, it doesn't matter to us. We have online people all over the world listening even right now. But for all of you and the community, it's something to be thinking about. We come from Sacramento. For years we are coming, every single time. इतना मेहनत से हम यहाँ पर आते हैं और कभी-कभी यहीं की community के 10 लोग भी नहीं हो पाते हैं. It's a sad event, isn't it? The community needs to come together. They need to feel it in their hearts that they have such a vibrating energy center here. And we don't want to be praised. हम नहीं चाहते कोई हमारा प्रशंसा करे क्योंकि हम तो संत हैं. आज यहाँ हैं, कल कहीं और हो जाएंगे. But we want कि आपका जीवन में परिवर्तन आए. We are focused that your life should change. And with this prayer, we thank each of you. We thank the sponsoring family today, Himanshu, Amita, Sugandhi ji, and their lovely kids. Look at this beautiful child. कितने शांति से बैठी है गोद में. She has the sanskaras, isn't it? The sanskaras are there, the values are there. And do you know what will happen when she grows up? In her unconscious, she's building these beautiful things. Already, yes. Right now, the journey starts now. It's never too late. So with this, we will do Aarti together. Please all rise. And then... So all, while you rise, I'm going to just say, everyone online, they're saying happy birthday. To Avyan and Anisha. Avyan and Anisha, they say happy birthday. Julie ji has brought some gifts. So Julie ji, if you want us to give those things. Yes. So she's so beautiful, lovely soul, Julie ji. Please face the camera for a minute so everybody can also see you online. This is Julie ji, Hari Om. She's a beautiful devotee, full of love. Full of love, saving everybody here every Sunday. So this is an example for what should be done during birthdays. It's not about gifts, but it's about thanking God for the journey from the birth to date. This is for Anisha. Okay, Avyan, will he come or will his parents come? Okay, usko chhod. Thank you, Julie ji. Okay, blessings to Avyan. The Devi Mata is here, the boy is a little shy, so we'll let him settle with his father. And then here, okay, let the grandparents also come, they can take this gift from us. आ जाइए, माता जी को भेज दीजिए. हाँ. आ जाइए, दादाजी भी है. आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, ठीक है. Because after all, it's their blessing. Hari Om Tat Sat. I think Avyan is excited, that is why. Jai Shri Krishna, aja. You can just turn the camera on him, but that's okay. All right, so let's do the Aarti. Thank you very much all for all of you. अभी आरती होगा तब डांस करेंगे तब. अच्छा. So if there are any seniors, please come first, then the kids with families, and then if you are single by yourself, then please wait till the end. And we'll all do Aarti, everybody will get time, there is no urgency. And after that, we will all have Mahaprasadam. And please have some Prasadam here also before you go. And touch the Bhagavad Gita. Gita ka jalur blessings lena, aap sabka kalyan aur mangal hoga. Hari Om. आरती के टाइम डांस. हाँ. जय भगवद गीते माँ, जय भगवद गीते. हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते. ओम जय भगवद गीते.
धर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा हो मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी चरण प्रदायिनी सब रिद्धि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्रों की स्वामिनी सकल शास्त्रों की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा
करोमि यज्ञात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। परिवार से सुखी ब्रह्मर्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिनः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामन्यं चतुर्विधं। हरिः ओम तत्सत् ब्रह्मर्पणमस्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। That's for him. Yes. Blessings for him. Hari Om, Hari Om. Hari Om. Anybody who has not received prasad, please come get the prasad and touch Bhagavad Gita also for blessings. Hari Om. Hari Om. Om, Hari Om. Om. खूब जप करो ओम। अच्छा ओम कल्याणस्तु। हरि ओम तत्सत।